Hello all the students. I welcome you all to my platform in Political Science, and in this YouTube channel we are going to discuss on political economy of development. This topic is a very important one, and you can find it in most of the papers and connect it with your research papers and many contemporary events just taking place. So let us start with the discussion on this topic, political economy of development. Now, when we are using this word political economy here, political economy is also used in many of the approaches to understand any particular event or any particular happening or anything which is uh, taking place. So the thing is why we are trying to understand the political economy of development, because political economy is an approach here. And when we are talking about this approach, so how both the factors, political as well as the economy, both the factors, they define and determine the ideas of development or anything which is connected with political economy, and the it could be development or it could be any other understanding of that. So basically, we are trying to understand any happening or any you can say contemporary issue from the political economy perspective. तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो मतलब है वो है कि किसी भी हम संदर्भ को या किसी भी आधार को हम यहाँ पे एक तो दो फैक्टर के थ्रू, एक तो राजनीतिक और एक अर्थव्यवस्था, दोनों के संदर्भ में दोनों के इंटरलिंकेजेस को हम समझेंगे किसी भी कोई भी मुद्दे को, कोई भी कंटेम्प्रेरी इशू को। यहाँ पे हमने विकास का मुद्दा लिया है, तो यहाँ जो टॉपिक है पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट का क्या होगा ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कुछ डेटा फैक्ट्स और एनालिसिस भी आएगा। तो कहीं कहीं जो डेटा है वो मैं स्किप भी करती जाऊंगी क्योंकि जो हमारा स्लाइड्स है उसमें वो डेटा मेंशन होगा, ठीक है, और वो इंटरप्रिटेशन मेंशन होगा। तो आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट बना रहे हो या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, ये नोट्स पूरा का पूरा आपका एक नोट्स तैयार हो जा रहा है, एक क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो तो आप समझ लीजिए, और साथ के साथ जो नहीं भी अगर मैं यहाँ पे जो स्लाइड्स में दिए हुए हैं अगर मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, सब समझा रही हूँ, तो आप उसको जो है आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टार्ट विद दिस आइडिया। Now, when we say development economics, it transcends mere economic growth. It delves into the intricate interplay of political, social, and institutional factors that shape a nation's trajectory. So, here we are trying to explore the political economy of development, examining the complex dynamics that influence progress, inequality, and the persistent challenges faced by developing countries. We will analyze historical trends, theoretical frameworks, and the role of key actors in shaping these development outcomes. India, a richly endowed subcontinental country, is home to about 1 lakh of humanity and faces extreme poverty, the small minority enjoying a high standard of living. Despite liberating itself from colonial rule through a mass struggle for independence, India still struggles to achieve a standard of living, dignity, empowerment for its over a billion strong population. The political economy of development, India must be viewed in the context of global forces, processes, and the Indian situation, considering the importance of internal dynamics. अब क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब हम ये पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तरीके से यहाँ पे हम दोहरापन देख रहे हैं कि भारत इतना अमीर होते हुए, भारत जैसा राज्य इतना अमीर होते हुए, चाहे मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, संसाधन की बात करें, हम जो यहाँ पे गुड सर्विसेज है उसकी बात करें, उत्पादों की बात करें, उसके बावजूद भी जब हम पॉवर्टी से रिलेटेड आंकड़े देखते हैं तो हम देखते हैं कि काफी लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और गरीबी में रह रहे हैं
परसेंटेज है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं मुहैया जिनको करा दी गई है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक डायकोटमी, एक डायलेक्टिक देखने को मिलता है कि क्या कारण है कि इतना अमीर होने के बावजूद, अमीर यहाँ पे मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अमीर से यहाँ मतलब है इतना रिचली रिसोर्सफुल होने के बावजूद कि यहाँ के लोग गरीब हैं। कि ऐसा होता है ना कि जहाँ अगर कंट्री रिच है तो लोग भी रिच होने चाहिए, पहले तो यही है। पर अगर हम इसको इस आधार को मापते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिसमैच है। इसी तरह से इस तरह का जो मिसमैच है जहाँ पे उसी चीजों को, उस डायकोटमी को, उस डायलेक्टिक को हम जो हम समझते हैं, क्योंकि फिर हम बहुत सारी बातों को भी लेके आएंगे जिसमें मैं पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करूंगी कि आखिर क्या कारण है कि इकोनॉमिकल जो हैपनिंग है या इकोनॉमिकल जो आउटकम है उसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे जब मैं पॉलिटिकल कह रही हूँ तो मेरा मतलब कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, इससे पूरा का पूरा संदर्भ नहीं है, पर इससे रिलेटेड कुछ जो है इश्यूज वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करूंगी कि क्या ऐसे हैपनिंग है, इसके साथ साथ जो और चीजें जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और एक डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे होते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे और स्टूडेंट्स मतलब कई बार इतने कंफ्यूज हो जाते हैं और दे देन स्टार्ट राइटिंग ऑन समथिंग, कुछ भी इकोनॉमी पे कुछ लिख दिया, इकोनॉमिकल डेटा दे दिए, है ना। तो जो भी कहीं से किताब पढ़ लिया उन्होंने या कोई मटेरियल ऐसा मिल गया जहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है ये टॉपिक को, तो फिर ये समस्या आती है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमें इसके दोनों जो इंटरट्वाइन डायनेमिक्स हैं इसको हम समझें, उसके बाद हम इसका आंसर लिखें। सिर्फ और सिर्फ हम दो शब्द को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे दो शब्द जो भी है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में जो है कहीं ना कहीं अपने आंसर्स को छुपा के रखा हुआ है इसमें। तो इस वजह से हमें, अगर हमें समझना है पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो हमें समझना पड़ेगा कि कितने मल्टीफेस्टेड जो फैक्टर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं क्या क्या है और किस तरह से वो इकोनॉमिकल हैपनिंग को, आउटकम्स को समझाने में हमें हमारी मदद करते हैं और क्या डायलेक्टिक है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी विभिन्न सिद्धांत भी हैं, थेरीज भी हैं। तो हमें जो है इसको ओवरऑल जो है एक सब्सटैंटिवली समझने की जरूरत है। और आपको अगर कोई भी समस्या आ रही होगी समझने में, कुछ अगर नहीं भी समझ में आता है, हमारा डिस्कशन खत्म हो जाए उसके बाद भी आप जाके कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी उस पर। और मैं ज़्यादातर लाइव नहीं होती हूँ उसमें, क्योंकि मैं जब अपलोड करती हूँ अपना कंटेंट तो उसी दौरान जो आप व्यू करेंगे इसका, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारा लिंक मिल जाएगा। आप फिर कमेंट में जाके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट आई डोंट डू लाइव, कुछ अभी मैं करती नहीं, कुछ होगा लाइव वाला तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। तो ये जो ग्लोबल डिवाइड है, द ग्लोबल डिवाइड इन पॉवर्टी ऑफ इनकम कंपैरिजंस, so we are trying to understand what exactly is this global divide. I told you about that the rich, the nation, poor people, this is the divide. So we need to understand what exactly is divide. जैसे जो गरीब हैं गरीब हो गए, जो अमीर हैं अमीर हो गए, रिच पुअर डिवाइड हम बोलते हैं, और हम weak strong divide कहते हैं। Divide is here a dichotomy, divide is here a dialectic. So the global divide is not merely about income disparities. It represents a chasm in opportunities, access to resources, and overall well-being. This divide perpetuates a cycle of poverty and limits the potential of developing nations. Factors such as historical colonialism, unequal trade relations, and systemic power imbalances contribute to this persistent gap. Now, poverty or income comparisons. While income comparisons offer a quantifiable measure of economic disparity, they often fail to capture the multifaceted nature of poverty. Focusing solely on income overlooks crucial aspects like access to healthcare, education, and basic infrastructure, which are fundamental to human development. अब
वैश्विक विभाजन केवल आय समानताओं के बारे में नहीं है, यह अवसरों, संसाधनों तक पहुंच और समग्र कल्याण में अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाजन गरीबी के चक्र को कायम रखता है और विकासशील देशों की क्षमता को सीमित करता है। ऐतिहासिक उपनिवेशवाद, असमान व्यापार संबंध और प्रणालीगत शक्ति असंतुलन जैसे कारक इस निरंतर अंतर में हमारा योगदान देते हैं। अब जब हम पॉवर्टी ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो जबकि आय तुलनाएं आर्थिक असमानता का एक मात्रात्मक माप प्रस्तुत करती है, वे अक्सर गरीबी की बहुमुखी प्रकृति को पकड़ने में विफल रहती है। केवल आप आय पर ध्यान केंद्रित करने से स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी हो जाती है, जो मानव विकास के लिए बहुत ही मौलिक है। ग्लोबल डिवाइड, वो हमने ग्लोबल डिवाइड की बात की। ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या है, रिच कंट्रीज के क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे हाई इनकम कंट्रीज ऑल्सो फेस द एक्सट्रीम पॉवर्टी, rising unemployment, increasing inequality, then misleading income statistics, income disparities are there, poor and rich in all countries. There are poor भी मिल जाएंगे, गरीब अमीर भी मिल जाएंगे आपको. Indian agricultural dependence on the other factors. Then marginal farmers struggles. The majority of farmers, they are small, they are landless, they are marginal, with inadequate access to resources, and rising their concern of their health issues and other living standard issues. Dalits and tribal communities, they are landless, they are socially and economically backward communities. They don't have the other civic facilities. Then we see the minority issues, then questioning the income comparisons. So these are the things that we need to understand. तो वैश्विक विभाजन में वैश्विक असमानताएं, गरीबी, बेरोजगारी जैसे असमानताएं हैं, अमीर देशों के भी मुद्दे हैं बहुत सारे, उससे उच्च आय वाले देशों की अत्यधिक गरीबी है। देन उसके बाद है आय में असमानताएं, फिर है सभी देशों में गरीब और अमीर, भारतीय कृषि निर्भरता, और फिर सीमांत किसानों का संघर्ष। अधिकांश किसान जो है छोटे और सीमांत है, जिनके पास संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच है, जिनसे उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। दलित और जनजातीय समुदायों की समस्या, छोटे अल्पसंख्यकों की विलासिता और आय तुलनाओं पर सवाल उठना, ये सारे जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वैश्विक विभाजन के आधार को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं। और पॉवर्टी ऑफ इनकम कंपैरिजंस, now income levels and differentials do not accurately reflect social economic conditions due to market centric activities, hidden costs and incomplete indicators. National income aggregates and averages often overlook internal differentiation and unequal power relations. The political economy of development is often dominated by income-related yardsticks, perpetuating hegemony and marginalizing disadvantaged groups. Addressing these issues could help reduce dependence on the former majority. Now, what are the things that we are trying to understand? So, there are perpetual hegemony, you can say, is there. There is this manifestation of hegemony is there. Then there is marginalization of disadvantaged groups. When you try to look into the political economy, it is often dominated by the income yardsticks. And what are these yardsticks? That few people will have the say on the, you can say, decision making, or you can say the economic decision making, political decision making. So why the hegemony or the decision making of only a few people are there, and the rest they are marginalized? So these are the issues, and we see in the whole system, and in the whole system there is unequal power relations, with no equality. That each one of us, they have the right to ask things, they have the right to decide, they have the right to control the resources. And when they don't have these things, only few people have, and they are marginalized, they are dependent on them, they are dependent on their charity, they are dependent on their pittance. Now, why these things they continue? So there is a perpetration of, you can say, mass poverty, this perpetration of income divide, and so there is you can say there is an income divide, and there is a whole global economic divide. So there are divides, and these divides
signifies the division, the differentiation, the division, the discrimination, the acute marginalization in the system. Now, गरीबी की आय तुलना तो बाजार केंद्रित गतिविधियां छिपी हुई लागतों और अपूर्ण संकेतकों के कारण आय स्तर और अंतर सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। राष्ट्र आय समुच्चय और औसत अवसर, आंतरिक भेदभाव और असमान शक्ति संबंधों को नजरअंदाज कर देते हैं। विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था अक्सर आय संबंधित मापदंडों पर हावी होती है, आधिपत्य कायम रखती हैं और वंचित समूहों को हाशिए पर ढकेल देती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने से बहुमत पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजों को समझें कि किस तरह से जो पूरा अनइक्वल पावर रिलेशंस है, शक्तियों का जो असमान वितरण है और कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जो है शक्तियां आ गई हैं, चाहे वो आर्थिक शक्तियां हों, चाहे राजनीतिक शक्तियां हों, और कुछ लोग जो है गरीबी या हाशिए पर रह रहे हैं। तो इस तरह से जो डिवाइड है, जो डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। तो ग्लोबल सोशल रियलिटी, now essentials of man development. Now we see that over half a century of conscious pursuit of GDP growth, primarily driven by the idea of trickle-down processes, has led to a significant improvement in living conditions, particularly in the poorer parts of the world. However, this approach may not be enough to address the vast number of poor and deplorable living conditions across countries and continents. The trickle-down view assumes that growth can reduce poverty and inequality, but it depends on factors like output composition, reduction of proportions, and employment generation. Despite impressive results, the widening income gap and worsening social, physical, moral, and cultural conditions still persist. Now, India's 10th five-year plan reveals disappointing progress in development, including less employment, stagnant infant mortality rates, and limited access to power, water, and other facilities. So, like even the poorer countries in Africa, Asia, and Latin America have lower life expectancies, higher infant mortality rates, and lower expenditure on health services. Education is also low, leading to low literacy and skills. So these are the bad developmental issues: inequality, unemployment, poor health and education. तो वैश्विक सामाजिक वास्तविकता जो है क्यों विकास की अनिवार्यताएं हो जाती हैं, उसमें हम असमानताएं हमें देखने को मिलते हैं, हमें बेरोजगारी, जो व्याप्त बेरोजगारी है उसमें देखने को मिलती हैं, खराब स्वास्थ्य और शिक्षा और देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि उसके नो डाउट कि सरकारें जो हैं काफी हद तक जो है इन चीजों को कम करने की कोशिश कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी काम हो रहा है, पर जो कहीं ना कहीं अभी जो थ्योरी और गैप कहते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस की जो गैप है वो भी बरकरार है। तो इसीलिए हमें जो है समझना पड़ता है कि क्या इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं और क्या पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है, कहीं ना कहीं दोनों का जब इंटरप्ले होता है, किस तरह से विकास पर ये प्रभाव छोड़ते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस तरह से हम इनको पॉजिटिवली इनको इन्फ्लुएंस कर सके, इसके लिए हमें और किस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो व्हाट आर द एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, then beyond state and market, then interest group diversity, holistic approach, historical experiences, major players, global influence. Now I explain one, जैसे कि हम कहते हैं कि holistic approach. तो जो political economy development है, it requires a holistic, integrated approach that abstracts from less critical context and tries to connect with the people, with the masses. And then we talk about the historical experiences, which should draw from historical experiences of alternative development patterns to understand the present and identify the key variables. So there are many things. Now, when you talk about historical context, so historically, what are the factors? Now we can also talk about when we're talking about the political economy of development, we can talk about the alternative models of development. In fact, the whole paper, the EU has this paper on
democracy and development, though the whole political science and its honors, the program, so NCWeb, UPSC. So this is a very important topic, which is it's an important and contemporary approach to understand any happenings, any contemporary issues. So this is important. So we have already understood what exactly is political economy, where you try to understand through the poverty reduction, and what we can do is we can go for good governance, we can go for sustainable development if we find that these problems are there. Then global cooperation is also one way out. Like there is a divide with economic divide, digital divide, any gaps in the developmental pattern. So we can try to take the help global community. We can try to uh, incorporate the help of the global cooperation. We can say public-private partnership or state and non-state actors and विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो एजेंडा है उसमें हमें किस तरह की चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं जो है गरीबी या जो भूखमरी है या असमान जो है संसाधनों का वितरण का जो मुद्दा है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है गरीबी को घटाना बहुत ज़रूरी है, गरीबी की रेखा में कमी लाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है। सुशासन को हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो भी पॉलिसीज बन रही हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और जो गैप्स आ रहे हैं पॉलिसी में बनाने में उसको एड्रेस किया जा सके। समृद्धि की हम बात करते हैं और समृद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर वैश्विक सहयोग होगा तो कहीं ना कहीं जो है कोई भी समस्या आ रही है, चाहे आतंकवादी रिलेटेड समस्या है, चाहे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, तो हम इस तरह के माइग्रेशन का मुद्दा है, हम वैश्विक सहयोग के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। Some important aspects of the political economy. We have already dealt with all the aspects. This is again the repetitions. That is the historical and contextual approach. What is the role of the state? The state role is very important in political economy. Then disempowerment and inequality. I already told you about these inequality pattern, which you can see how the deprived groups they are deprived and they are disempowered. And many times the process is responsible for it. And it has happened that only because of the process these people have been disempowered. Now, state market roles. What is the role of state? What is the role of market? The critique of the whole mainstream developmental theories, whatever the mainstream developmental theories are there. So, who all are critiquing them? What are the critiques of the mainstream developmental theory? Then, broader social issues, reformist concepts, integrated social science perspective. So this is we know that it is a multiple dynamics, it is integrated in the political economy, so we have to look into the holistic concept. तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जैसे ऐतिहासिक और प्रासंगिक दृष्टिकोण हो गया, राज्य की क्या भूमिका है, अशक्तता और असमानता को हम कैसे एड्रेस करेंगे, राज्य बाजार भूमिकाएं किस तरह से जो है काम कर रही हैं, विकास सिद्धांतों की जो हमारे मॉडल्स हैं उसकी आलोचना हमें करनी है, व्यापक सामाजिक मुद्दे क्या हैं, सुधारवादी अवधारणाएं और एकीकृत सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य। नाउ हम चलते हैं थियरीज, जैसे मैंने बताया था कि क्या क्या थियरीज हैं डेवलपमेंट थियरी एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। Now, the most important theories, these are the three important theories. First is the modernization theory. Modernization theory आप पढ़ सकते हो, उसको हम political modernization भी कहते हैं। अगर आपने comparative पढ़ा है तो comparative politics में एक approach है। तो this approach focuses on internal factors and stages of economic growth. W. Rostow का stages है economic growth का, वो चाहो तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पढ़ सकते हो तो बताया जाएगा कि किस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका क्या क्या स्टेजेस है और सबसे हाईएस्ट स्टेज हम किसको मानते हैं। देन डिपेंडेंसी थियरी एंड्रे गुंडर फ्रैंक द्वारा दिया गया, एंड दिस एम्फसाइजेस ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड अनइक्वल पावर डायनामिक्स। Then world system theory analyzes the global capital system and its impact on development. This theory was given by
I think Edward I can even look into the theory and the theoretical pattern who has given this theory, world system theory. Emmanuel Wallerstein, I think. The thinker is Emmanuel Wallerstein. Then capital accumulation, role and limitations. So what are the process of capital accumulation? So we can see I have already told about the historical insight, varied outcomes, influencing factors, obsession with capital, challenges for industrialization, recent realization. विकास और पूंजी संचय के सिद्धांत. तो आधुनिकीकरण सिद्धांत है इसमें, एक है निर्भरता सिद्धांत और तीसरा है विश्व प्रणाली सिद्धांत. तो ये तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है. आधुनिकीकरण सिद्धांत डब्ल्यू रॉस्टो ने दिया है, निर्भरता सिद्धांत एंड्रे गुंडर फ्रैंक का है और विश्व प्रणाली सिद्धांत इमैनुअल वॉलरस्टीन का है. तो इन तीनों सिद्धांतों को आप डिटेल्स में पढ़ना. मैंने पहले ही बताया था कि 12th की एक एनसीईआरटी आती है आईआर की, आप वो पढ़ सकते हो. आईआर की कोई भी थियोरेटिकल किताब जिसमें आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस दिया है उसको आप पढ़ सकते हो. उसमें आपको एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का अप्रोच मिलेगा. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आपको एक चैप्टर मिल जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, वो वहां से भी आप पढ़ सकते हो. तो कहीं ना कहीं दोनों से ये कनेक्ट करता है. ओवरऑल ये पूरा का पूरा अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस को समझाने में, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझाने में हमें हेल्प करता है. Then international capital flows and the role of the state. Capital accumulation is crucial for development in poor, less developed, late industrializing countries with weak states. Since the end of the Second World War, capital transfers have been a key part of development economics. The World Bank and its regional affiliates encourage international capital flows such as official development assistance, concessional loans, grants, foreign direct investment, FDI, portfolio investment, external borrowing, and trade credits. These inflows bring advanced technology and new products, helping modernize the economy. However, the impact of these flows is difficult to assess due to debt liabilities and short-run speculative capital movements. Transnational companies are the main agencies, and FDI and external finance are viewed negatively by poor people. So, international capital flows, it helps to understand the political economy of development. And what is the role of the state? The role of the state is very crucial as it helps in regulating markets and providing public goods and promoting inclusive growth. Effective governance and institutions are essential for successful development. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह और राज्य की भूमिका. तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें गरीब, कम विकसित, देर से औद्योगिकरण करने वाले कमजोर राज्यों वाले देशों में विकास के लिए पूंजी संचय बहुत ही महत्वपूर्ण होता रहा है. द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से पूंजी हस्तांतरण विकास अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. विश्व बैंक और उससे क्षेत्र सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करते रहे हैं, जैसे आधिकारिक विकास सहायता, रियायती ऋण, अनुदान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, पोर्टफोलियो निवेश, बाहरी उधार और व्यापार क्रेडिट. ये प्रवाह उन्नत तकनीक और नए उत्पाद लाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है. हालांकि ऋण, देनदारियों और अल्पकालिक सट्टेबाजी पूंजी आंदोलनों के कारण इन प्रवाह के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल हो गया है. अब हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह में राज्य की क्या भूमिका है. तो राज्य बाजारों को विनियमित करने, सार्वजनिक सामान उपलब्ध कराने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सफल विकास के लिए प्रभावी शासन और संस्थाएं दोनों ही आवश्यक हैं. नाउ रोल ऑफ द स्टेट. जैसा कि हमने अभी पिछले ही स्लाइड में किया है कि स्टेट का रोल क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है. तुम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला है कैपिटल एक्यूमुलेशन, रोल एंड इट्स लिमिटेशंस. सोशियो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग में
राज्य का क्या रोल है। सोशो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? True development requires changes in socio-economic structures, and it should focus on national, community, and individual empowerment, with techno-economic aspects being subsidiary. Then resource transfer policy critique beyond capital accumulation. So we need to criticize the whole aspect of capital accumulation, because the whole idea of capital accumulation, it leads to corruption, it leads to nepotism, and it leads to the bad development, or you can say the bad growth, or you can say uh, somewhere it is not leading to good governance. So now poor colonial development, now post-colonial development, the post-colonial era saw a push for self-reliance and independent national development, with the state playing a key role in accumulation and creating alternative power structures. Now, after the colonialism, there were many states which got independence, and so they had their own challenges. Now, after the colonial dimensions, if we look into the colonial dimension, post-colonial dimensions, there were many challenges. And for the new states which had got independent, there were challenges of self-reliance and independent national development. So, keeping that also in mind, there was the idea of building the alternative power structures, bringing new alternative model of development. And then role of public sector in India. Now, when there is state, obviously we know that state is responsible for bringing the welfare programs, and since in the documents book of state policy also it is written that India being a welfare state, Article 38 and 39 it talks about how the state will try to uh, implement these social economic policies for the welfare of the people. So the role of the state, we can say it's a very holistic, it is very comprehensive, it is very balanced. So the role of the state is important in containing we can say the nepotism or corruption, or that is maladministration. तो जो राज्य की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम पूंजी संचय की बात करते हैं तो पूंजी संचय से कहीं ना कहीं असमानताएं हो रही हैं, और पूरे विश्व में जो व्याप्त एलपीजी जब से आया तो उससे भी समस्याएं हुई। आगे भी स्लाइड में हम एलपीजी की बात करेंगे तो समस्याएं बढ़ी उससे। तो उन समस्याओं को कम करने के लिए राज्य जो है कल्याणकारी जो योजनाएं बना रहा है, राज्य कल्याणकारी योजनाओं को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसके इम्प्लीमेंटेशन को सही तरीके से हमें देखना होगा। जो भी संसाधन हस्तांतरण नीति है उसकी भी हमें कहीं ना कहीं आलोचनात्मक अध्ययन करनी पड़ेगी कि जो हस्तांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं समाज में समतावाद विचारधारा को लेके आ रहा है, नहीं आ रहा है। पूंजी संचय से जो समस्याएं आ रही उसके बारे में बात करना होगा। उत्तर औपनिवेशिक जो विकास है, जो उससे मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका या जो सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर है किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और क्योंकि राज्य का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है तो उसकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। देन हम देखते हैं द काउंटर रेवोल्यूशन, द एलपीजी पैकेज। मैंने बताया कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद जो है समस्याएं जो है बढ़ गई। समस्याएं इस तरह से बढ़ गई कि पूरे विश्व में सारी इकोनॉमीज ओपन होने लगी। तो एकदम से जो इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमीज जो क्लोज रही वो ओपन हो गई, तो वो चैलेंजेस खुल गए, तो नए चैलेंजेस आ गए, और किस तरह से उस चैलेंजेस को एड्रेस करें वो इम्पोर्टेंट है। और हर कंट्रीज के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, पोलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है, उसकी जो सिस्टम है वो अलग अलग है, और जो लोग जिस तरह से वहाँ पे हैं उनके भी जो इकोनॉमिक पैटर्न है उसको भी देखना पड़ेगा। कहीं पे ज़्यादा जो है गरीब लोग नहीं रह रहे हैं, बैलेंस्ड मतलब मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, गरीबी रेखा से कम वाले कम लोग हैं कुछ जगह। तो इस तरह से जो है हर कंट्री का अलग अलग डेवलपमेंटल पैटर्न है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या क्या है, जैसे कि स्टेट एक्टिविज्म का रियलाइजेशन, स्टेट किस तरह से जो चीज़ों को समझ रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल डायनेमिक्स क्या है, costly and unsustainable growth, counter-revolution in theory, then India's LPG era, need for alternatives. We're always talking about alternatives. When there are problems, when there are issues, when there are concerns, we need to come up with new alternatives, with some innovative alternatives. As Gandhi also talks about the alternative model of development. तो जैसे कि हम देख रहे हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ने इनके आने के बाद 1990 के बाद बहुत
बहुत सारी समस्याएं भी आई, नवउदारवादी विचारधारा आई, जिससे जो विकास के लिए आई नो डाउट, पर विकास के साथ साथ क्योंकि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमी है और इकोनॉमी थी जो बहुत ज्यादा क्लोज रही, तो उनको एकदम से ओपन कर दिया गया तो चैलेंजेस बढ़ गए। और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज रहा और डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह से एफडीआई में इन्वेस्टमेंट होना, डिसइन्वेस्टमेंट होना, पब्लिक सेक्टर का शेयर्स कम हो जाना, तो इस तरह से भी समस्याएं आई। और क्योंकि इंडिया में खुद जो गरीबी रेखा के जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा ही परसेंटेज उनको ज्यादा रहा है, तो इसलिए चैलेंजेस भी ज्यादा रहे। अब हम देख सकते हैं कि क्या है आउटलाइन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो मैंने बताया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पावर डायनेमिक्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, किस तरह से हम जो संस्थाएं हैं उनको हम किस तरह से मजबूत करें ताकि इस तरह का जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बिल्ड कर पाए। धन्यवाद, और आशा है अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।